शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear students, in previous lecture we studied the first part of unit number 4, the four seasons. Now we are going to start the second part of this unit number 4, the four seasons. Today's topic is reading and explanation of second part of unit number 4. I am starting the reading of second part of this unit. Open your books at page number 34. Open your books at page number 34. अपनी बुक्स खोलें पेज नंबर 34 पर 34 पर आप लोगों का सेकंड पार्ट का आज रीडिंग और एक्सप्लेनेशन होगी यूनिट नंबर 4 की. गौर से सुने इसे. प्रीवियस लेक्चर की तरह मैं इसे मॉडल रीडिंग के तौर पर पहले पढ़ूंगा, फिर आप लोगों ने दूसरी मरतबा मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, मेरे साथ शरीक होना है रीडिंग में, और इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा. सो गेटिंग स्टार्ट द रीडिंग एट पेज नंबर 34. नंबर 3, ऑटम. ऑटम स्टार्ट्स इन सितंबर एंड लास्ट्स till December. This season is usually dry and windy. Leaves change their color and fall in this season. This season is also known as fall. Number 4, winter. Winter is the coldest season of the year. The weather remains cold almost throughout the country. It also snows heavily in some parts of Pakistan. People wear warm clothes to protect themselves from severe cold. In winter, the nights are long and days are short. अब दोबारा मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस दौरान आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ना होगा ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट वर्ड्स की भी सही हो जाए. नंबर 3, ऑटम. ऑटम स्टार्ट्स इन सितंबर एंड लास्ट्स टिल December. This season is usually dry and windy. Leaves change their color and fall in this season. This season is also known as fall. Number 4, winter. Winter is the coldest season of the year. The weather remains cold
almost throughout the country. It also snows heavily in some parts of Pakistan. People wear warm clothes to protect themselves from severe cold. In winter, the nights are long and days are short. सेकंड पार्ट की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में ब्रीफ कर देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था, उसमें 2 सीज़न 2 मौसमों का जिक्र हुआ था, जिसमें समर और स्प्रिंग शामिल था। हमने समर और स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। आज की जो रीडिंग थी उसमें 2 सीज़न और बताए गए हैं, जिसमें ऑटम और विंटर शामिल है। तो ऑटम के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारे मुल्क में सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक रहता है। ये ऐसा मौसम है जिसमें सर्द खुश्क हवाएं चलती हैं। खुश्क हवाएं चलने की वजह से दरख्तों के जो पत्ते हैं वो सूख कर गिरते हैं। इस वजह से इस मौसम को पतझड़, फॉल कहते हैं। पतझड़ को पतझड़ यानी पत्तों के गिरने का मौसम भी कहा जाता है। इसी तरह चौथा मौसम हमारे मुल्क में है विंटर। विंटर जो है वो मुल्क पाकिस्तान में, वतन अजीज में सबसे ठंडा जो मौसम है वो विंटर है। ये तकरीबन पूरे मुल्क में इस मौसम में सर्दी पड़ती है, और जो कुछ पार्ट हैं पाकिस्तान के ऐसे, जैसे बलूचिस्तान में और सरहद में कुछ जो माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पर सख्त सर्दी की वजह से हेवीली बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और इस मौसम से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में जो है ना, नाइट्स जो होती हैं, रातें जो होती हैं वो लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो ये था आज के आपका लेक्चर, जो यूनिट नंबर 4 के बारे में सेकंड पार्ट था। उसका हम लोगों ने आज रीडिंग और एक्सप्लेनेशन इसकी की। इन दोनों लेक्चर्स को बार बार सुने, गौर से सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करके वर्ड्स को पढ़ें, और इसके बारे में जो भी बताया गया है उर्दू में एक्सप्लेन किया मैंने, उसको भी गौर से सुने। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।